एक किसी की ज़िंदगी पे ऊपर. मैं फीचर फिल्म नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये है एक डॉक्यू फीचर. सो उसके लिए धीरे धीरे आई थिंक उसकी एक चाहत बढ़ती है. जब लोग देखेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो आई थिंक लोग चाहेंगे कि अच्छा देखते हैं. ब्रह्मा कुमारीज के जो लोग हैं, आई थिंक वो एक दूसरे को बोलेंगे देखने के लिए, वो देखेंगे. सो ऐसे ही फिल्में आई थिंक धीरे धीरे फैलती हैं, लोग देखते हैं. The number of people coming to the theaters, when we say that animation films, that will be the second or third choice. So we need to change the Yes, see, also, mindset. yes. And the people like Shujit Sarkar, it was really surprising that you are into advocating animation. It's a fine, this one. Yeah, even, And yeah. Even I am also surprised myself that I also came into this. So, uh, but the जैसे आपने कहा कि it's not just for children, ma'am. It is, I think, when the film Coco came out, I was in tears watching the film. I don't know, have you seen Coco or not? So or so the kind of finish, the kind of the artistry which has gone into animation film in the West, I think we can also do it. It just we need in animation films. And very happily, if you see in most of the films, there are all A-list actors. If they come, it reaches more homes. So I think that participation is also very, very important. They should not just think that it's okay, one more small two-dimensional cartoon film that we are making. So you're right, and yeah, that's very, very important. I will try and be part of it. I'm also learning, so it's a new ground for me. So I just wanted to ask you that, like you said, this was your first brush with animation, so to say, and you just advocated that animation is something that everybody should use in the film industry. You've made Udham Singh, which is a fantastic film, but since it's a period film, it must have taken that much time, energy, effort to recreate that time. And yet these are stories, and India abounds in those kind of stories which need to be told. Do you see animation as a possible, I don't want to say, as something that you would use in lieu of, but can animation become probably one of the main kind of storytelling tools for stories like this, which are set maybe... All of the buildings are all animated. They're all 3D animated, assets which we have used. Whether it's a smoke, or whether it's a building, or it's a cloth, or whether it's a character who's standing there at a distance. We have made double-decker buses, trams, so everything is animated. So you create each and everything. And in an animation process, that's what I've learned, that every asset are created. So it's common for both the platforms. It's just that you have to create characters here in animation and a beautiful script, which is common for both. Again, script is the key to the storytelling. So if you have a really good script to talk, you can take any format and talk about it. I don't think that should be like, we have so many folklores. I think so they can be, I mean, if people talking about big scale those films which are now becoming popular, I think same big scale can be created in animation, and people can go, I mean, to watch. I mean, even if you watch all the period films from Hollywood which is come, or action thrillers, half of it is created on animation, if you see. So there's a lot of even contribution. Titanic, sir, back then I think a lot of it was created. Yes, I mean, whether it's Titanic, or if you see Avatar now, and everything, how they are created. So May I add to this? yes, you can, Sir. please. Yeah. See, as far as our studio is concerned, iRealities, we are predominantly in history, and that is our focus now. So we have a film coming on Hari Singh Nalwa. We have a large project coming on Salahuddin Ayubi, if you know the Islamic warrior. It is a Middle Eastern India co-production, massive animation film. If you go to a place called Chamkaur in Punjab, there is a theme park
which has 10 theaters telling animated stories of 100 years of Sikh history. We are in another 10-15 days, we are releasing a new museum on Bhagwan Valmiki in Amritsar. Again, it has hours of animated content telling stories of Laukush, Ma Sita. See, problem is you guys are not looking at animation. We are trying as a studio, and we get a tiny budget. We get a budget equivalent to a regional Marathi film, to a film which you expect to compare to Hollywood. Hollywood took 100 years to reach 100 crores. Nobody asked them that question. But I am 10 years doing animation film. Every time I take a project out, people ask me, why are you not like Hollywood? Ask them. I've never heard this question. Anybody asking a Bollywood producer? I never heard that people asked Yashraj why your films are not like MI. You don't. You ask us. Right? If you really see what is happening in the industry, hundreds and thousands of studios are working exceedingly hard. It is extremely hard because first, this kind of questions, extremely tiny budgets, and in that we do 70-80 crore revenue. Are you aware that that film did 112 crore revenue, animation film? Tell me in this room how many press guys know that that film did 100 crores. And when there was a wintry night, when farmer protest and farmers were losing there is a Sardar here, so he will tell. I was called at night asking a permission to show Char Sahibzade to farmers to get the motivation back. How many of you know about it? You will know Kartik Aryan gone somewhere. No, Sujit sir has seen how hard it is. Yeah, it is. How hard it is, because even somebody blinks his eyes. Take an example, an animator does 1 second animation a day. And still we are running the studios. So and it is his modesty, he says he is consultant, but he has really, really worked hard to get us where we are. And I'm really happy that Hari Bhavija ji or Sujit ji are looking at us and not keeping us into that 15 lakh an episode television serial space. So you guys also have to look at us. And I think Sujit sir, in that sense, has really, you know, just him and people like him and faces like him, coming out and talking about the importance of animation. I think Where it gets I mean, is Prasad just spoke, is the budget, because it's a time-consuming art format. So, like in every frame that you make. So, I think to somebody, a producer, to come in and put that much of an budget, because it needs that kind of time and talent to put together. I think that's the it will be needed. Yes, why not? If there is a huge scale of an animation film and that animation film gets a subsidy, so that will be or a tax rebate to start with. Why not? I mean, and something with taking a folklore and making it huge. So talent. My question is for all of you. थैंक यू मैडम और ऑल मैं सभी मीडिया कर्मियों को स्वागत करता हूं ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। हमने ये क्यों चुना है, जो इस विश्वविद्यालय के स्थापक थे दादा लेखराज, जिनको हम पिताश्री ब्रह्मा कहते हैं, उनके बारे में हमने उनके जीवन में बहुत संघर्ष के बाद वो इस संस्था यहाँ तक पहुँची है। आज सारी दुनिया महिला सशक्तिकरण की बात करती है, किंतु दादा ने आज से 85 इयर्स पहले महिलाओं को सशक्त करने के लिए कदम उठाया था और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, और उसमें कितने संघर्ष हुआ है वो इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा। नंबर 2, हमने एनिमेशन क्यों चूज किया? हम लोगों ने 1-2 एपिसोड बनाए थे। हमारे जो पिताश्री थे उनके हाइट वेट और अपीयरेंस ऐसा था, मैं बहुत स्पष्ट बोलूँगा आज, हमने दारा सिंह जी को लिया था और एक एपिसोड बनाया भी था, किंतु हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी थी, इंचार्ज थे, उन्होंने कहा संस्था कभी भी किसी को डुप्लीकेट नहीं ले सकती है पिताश्री की जगह पे,
और इसीलिए हम लोग एनिमेशन में आए। जो मैडम ने सवाल किया कि एनिमेशन के लिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम लोगों ने इसीलिए चूज किया कि एनिमेशन एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बनता है और हम जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, जबकि हम किसी एक्टर को साथ में लेते हैं तो वो नहीं हो सकता ऐसे। और इसीलिए संस्था ने एनिमेशन मूवी चूज किया। और इस सारे मूवी में पिताश्री के जीवन की कहानी है, उन्होंने कैसे संघर्ष किया और कैसे इस संस्था को स्थापन किया, इसका और उसका समाज से क्या संबंध है वो आपको इस मूवी में पता चलेगा। मैडम ने पूछा कि जनरली एनिमेशन बच्चों के लिए होता है, ऐसा नहीं है। इस फिल्म के द्वारा, जैसे सुजीत सर ने बोला और प्रसाद सर ने भी कहा, कि एनिमेशन एक नया फ्रंट ओपन हो रहा है, हम उसका लाभ लेवे। इस संस्था ने भी उसका लाभ लेना नक्की किया और इसीलिए हम इस एनिमेशन मूवी में आए हैं। और ये एनिमेशन मूवी, मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ, इतना बड़ा एक जादू करेगा कि समाज का हर एक वर्ग इसको आकर देखेगा और संदेश पाएगा और पिताश्री के बारे में जीवन कहानी को भी समझेगा जो समाज से जुड़ी हुई है। हम इंडिविजुअल नहीं कर रहे हैं, हम संस्था का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं। एक बहन ने पूछा सर को कि आप कैसे जुड़े इनसे, ये कोई प्रोपेगेंडा की बात नहीं है। एनिमेशन के द्वारा समाज के उत्थान की बात करनी है। हमें ये समझाना है कि महिला सशक्तिकरण कैसे हो रहा है, हमें उनको समझाना है कि मेडिटेशन क्या कर रहा है, मेडिटेशन में क्या ताकत है, वो हम इस फिल्म के द्वारा बताने चाहते हैं। बाकी एक बात जरूर कहूँगा, टेक्निकल तो इनके जितना मैं नहीं समझता हूँ, किंतु सुजीत सर ने और प्रसाद सर ने हमें बहुत कुछ ग्रामर समझाया। मैडम ने जैसे कहा, मैं गॉडलीवुड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, 10 साल से आज पूरा प्रोडक्शन हाउस हम चला रहे हैं, किंतु मुझे ये एनिमेशन फिल्म ने बहुत कुछ ग्रामर सिखा दिया कि एनिमेशन में क्या ताकत है और क्या होना चाहिए। और सचमुच एनिमेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है जो एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा और इससे बहुत सेवाएं होंगी। इसीलिए संस्था ने इसे पसंद किया है और इस फिल्म में आपको ये कहानी के साथ मैसेज मिलेगा। थैंक यू। ठीक है, कुछ ऐसा और भी देखने को मिलेगा कि संस्था के बारे में और ज्यादा जानकारी हम लें? जैसे आपकी एक फिल्म तो बन गई है एनिमेशन की, क्या दोबारा भी कभी कुछ और इस संस्था के बारे में बनाना चाहेंगे आप? मैडम, फीचर फिल्म, एनिमेशन फिल्म में हम पहली बार आए हैं। नहीं, बाकी तो हमारे कम से कम 4,500 डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, हमारे पास 19,000 एपिसोड बने हुए हैं, 3,500 गीत बने हुए हैं। हम 4 चैनल चला रहे हैं, सैटेलाइट, यूट्यूब, ओटीटी चैनल चला रहे हैं, और जिसमें हमारे पास 27 लाख सब्सक्राइबर है एक एक के ऊपर। माना बहुत वास्ट है, हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। किंतु सर का आधार लेकर, जो क्रिएटिविटी सर ने कहा, हमें उनकी क्रिएटिविटी को इसमें डाला, प्रसाद सर के एनिमेशन की ताकत को हमने डाला है। बाकी संस्था तो काम कर रही है और आगे करती रहेंगी। मैं आपको कहूँगा कि हमारे इन चीज़ों से आप भी जुड़े, यूट्यूब से जुड़े, ओटीटी से जुड़े, सैटेलाइट चैनल से भी जुड़े, हम सब जगह पे हैं और करते रहेंगे। हरिलाल जी, आपने बहुत अच्छा कहा। इनफैक्ट जब भी मैं देखता हूँ आज की तारीख में कंटेंट, सेक्स, वायलेंस और टेररिज्म, और वही इस सोसाइटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले आपको, सुजीत दादा को, प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज यू गाइस रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर्स, नॉट जस्ट फिल्म मेकर्स। क्योंकि सोसाइटी में एक, आपकी जो पुरानी फिल्म है मुझे बहुत पसंद आई है, विकेड ऑनर, समथिंग आई कैरीड होम एंड स्टेड विथ मी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इन ए ब्यूटीफुल वे, इन इट इनरिच्ड माई लाइफ। सो सबसे पहले आपका जो कंटेंट है ये आज की तारीख में बहुत कम देखने को मिलता है, एंड पीपल अवॉइड इट। बट क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि सुजीत दा और प्रसाद जी ने ऐड किया है, तो एक खूबसूरत बात समाज को कही जाएगी और एक खूबसूरत तरीके से जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो आई एम रियली हैप्पी जनरली। एंड ये एक लाइन जैसे आपने कहा, ये शुड ओपन अप ए न्यू एवेन्यू टू स्टार्ट मेकिंग समथिंग विच कैन को क्रिएट मैजिक। और दादा ने कहा मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, विच इज अलार्मिंग। We need something which can sort of balance, which can create something beautiful in the society. So thank you so much. इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे हरिलाल जी and सुजीत दा, since press people are there, we all are there. इस फिल्म के जरिए लाइट जो नाम आता है, मैंने देखी नहीं है, लाइट is something we all need. It removes darkness. So could you like to elaborate how, like,
इज इट ए फिक्शन, कंप्लीट फिक्शन, नॉन फिक्शन? जैसे आपने कहा उनकी लाइफ स्टोरी तो 100% वैसी ही थी, या थोड़ा सा हमने इसमें क्रिएटिविटी का सहारा लिया सो इट कनेक्ट्स विद द मॉडर्न जनरेशन टुडेज यूथ? सो वुड यू लाइक टू आंसर दैट, दादा, since you are the creative on that? No, as I said, it's a docu feature. So it's a documentation of the of Shri Lekhraj ji. So जिनको प्यार से हम ब्रह्मा बाबा बोलते हैं. So it's a documentation of his journey through from the 1930s till the 1960s. So in different chapters, what all he faced and how he empowered, how he got his enlightenment. So it's a spiritual journey of this man, and we Follow that how all and what all he sacrificed, which is spiritual leader, which happens. But there is something really unique because of the empowerment and also the introduction and the application of Raja Yoga, Raj Yoga meditation, which he introduced and he applied and he practiced, and which he passed on to the next generation, and given and handed over the organization, didn't keep it to himself and gave it to the women, and they're all young women and wives who came and just found some kind of a power in when they were there with him. So I think that is the magic of this this film, The Light. I think we are all looking for that light, as आपने कहा, from darkness. So I think this film will give you that light, and maybe what it will do is शायद इस फिल्म से सारे जवाब आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इस फिल्म से आपको एक सोर्स मिलेगा कि मैं और जवाब ढूंढने चलता हूँ अभी. So वो एक रास्ता मिलेगा आपको जवाब ढूंढने के लिए. Question will come and we'll explore more in that हाँ, direction. शायद आपको और जवाब आप जानना चाहेंगे. very तो ये nice. आपको एक क्वेश्चन डाल के जाएगा, तो आप शायद जानना चाहेंगे कि है क्या, क्यों है. उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा. वो जस्ट एक फिल्म से आपको शायद पूरी चीज समझ में नहीं आए, लेकिन आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आपके दिल में दे जाएगा कि नहीं, कुछ बात है जिसको मैं आगे ले जाता हूँ. So thank you so much. Thank you so much, sir. लाल जी, आपसे एक सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे. तो आपकी संस्था कुछ ऐसा कर रही है बच्चों के लिए, या महिलाओं पे कहीं अत्याचार होता तो वहाँ भी जाके उनको समझाना, या कुछ इस तरह का कर रही है जिससे अवेयरनेस जागरूक हो कि हाँ वास्तव में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए? मैडम, ये संस्था 99% महिलाओं से संचालित है, और इस संस्था में करीब 30,000 डेडिकेटेड महिलाएं पूरे संसार में. इतना बड़ा फौज है, तो ये एजुकेटेड करना, कहीं प्रॉब्लम होता है तो उनको सहयोग करना, हमें जहां बुलाते हैं वहां हम हाजिर होते हैं. और आपने देखा होगा कि मोदी साहब खुद भी संस्था से जुड़ते हैं, संस्था के कार्य में इंटरेस्ट लेते हैं, और संस्था जिसको कहती है उसमें वो हम लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं. दूसरा, जो प्रेसिडेंट है अभी मुर्मू जी हुए हैं, वो भी संस्था से जुड़े हुए हैं. वो क्यों? महिला सशक्तिकरण का कार्य जो संस्था कर रही है, उसके कारण ये इतने महानुभाव जुड़े हुए हैं. और इस फिल्म के द्वारा ये बात को हम स्पष्ट करेंगे कि जो कार्य प्रधानमंत्री जी 5-7 साल 10 साल से कर रहे हैं, या मुर्मू जी जब से गवर्नर बने थे तब से उन्होंने उठाया था, किंतु ये संस्था तो 85 इयर्स से कर रही है. और दादा ने और उनके सारे जो भी फैमिली थी, उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया. तो हम महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं. हमारे हॉस्पिटल भी है, हमारे होम्स भी हैं, जहां हमें बुलाया जाता है, हमारी डेडिकेटेड बहनें जाती है, उन्हें मदद करती है, उन्हें मानसिक रीत से मदद करती है. एक मैं उदाहरण दूं, अभी अनफॉर्चुनेटली बिपिन रावत जी चले गए. बिपिन रावत जी ने तीनों ही माना आर्मी में महिलाओं को, जैसे क्योंकि जब भी शहीद हो जाते हैं तो उनके पीछे महिलाओं को कैसे संभाला जाए, वो कार्य उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को सौंपा था. और आज भी हम ऑलमोस्ट सभी जगह पे आर्मी के जहां भी उनके कैंटोनमेंट है, वहां हमारी संस्था वो काम कर रही है. उसी प्रकार ऑर्फनेज वाले भी हमें बुलाते हैं. तो
तो विविध प्रकार से हम इन कार्य से जुड़े हुए हैं और कार्य कर भी रहे हैं, और आगे भी हमारे पास कुछ आएगा तो हम जरूर करेंगे। यह हमारा सबको विश्वास है और हमारा कमिटमेंट है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुजीत जी and Prasad ji, Hiralal ji, and Thank you. all my media friends. We are very happy that we have had this media interaction. Thank you. Thank you. Thank you so much.